Good, mo- Good morning, children. Today we will be doing your 14th unit of your grammar book that is called articles. Children, articles are, words which we use before nouns. All right. So there are three articles called a, and the. A and the. So a and an are called indefinite articles because ये जिन nouns के पहले यूज़ होते हैं they are indefinite and definite article is the, that is the noun which we will be using it with will be definite. It will be having a unique name to it. For example, the Himalayas, for example, the Taj Mahal, etc. So they have definite or unique names. All right. A and an are used with singular countable nouns. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर फॉर्म के पहले हम ए एंड एन यूज़ करते हैं, लेकिन ए एंड एन को यूज़ करने के लिए देयर आर फ्यू रूल्स. लेट्स सी टू द रूल्स विच वी यूज़ फॉर यूजिंग ए एंड एन. फॉर यूजिंग ए बिफोर अ नाउन, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जो भी आप नाउन लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, सो ये जो फर्स्ट लेटर है दिस शुड बी अ कॉन्सोनेंट. दैट मीन्स ये वावल नहीं होना चाहिए. वावल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. नाउ सी, I'll write few examples for you here and I request you to pay attention. An apple. Then you can see a book. A yolk. All right. Vowels A, E, I, O, U. Okay, vowel sounds A, E, I, O, U. Now see, apple is A or it is giving a giving a vowel sound, so हम उसके पहले an यूज़ करेंगे. जो भी vowel sounds होती हैं उनके पहले हम an यूज़ करते हैं, और जो भी consonant होते हैं यानी कि A to Z में इन पांचों के अलावा जो भी sounds होती हैं वो सारी consonants कहलाती हैं. consonants. ओके, सो वो सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं. तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं उसके पहले हम ए लगाते हैं और वावल साउंड्स के पहले हम एन लगाते हैं. लेट्स सी, अ योक. सो इसमें वाई का साउंड आ रहा है, दैट्स वाई वी विल बी पुटिंग ए हियर. ऑलराइट, सो यू आर क्लियर नाउ. लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. We won't say a bread because this is uncountable. We will say a slice of bread because bread, sugar, oil, tea, milk, water, cotton, butter, etc. are uncountable nouns. So with uncountable nouns we do not use a and an. Alright, we have just read that an is used before vowel sounds. Okay, the is used before definite person or thing. That means a proper noun. जो भी proper nouns होते हैं जनरली उनके आगे हम the यूज़ करते हैं. Not always, but most of the times. For example, this is the book I thought I bought yesterday. The boy in the red shirt is my brother. Now see children, हमने यहाँ पे द क्यों यूज़ किया बॉय के पहले? द बॉय बिकॉज ये जो बॉय है उसने रेड शर्ट पहना है. यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है दैट द बॉय इन रेड शर्ट. Okay, so the is used for this whole
noun here. Okay, that the boy in red shirt is my brother. More examples are the Eiffel Tower, the Yamuna, the Ramayana, the Himalayas, the Times of India, the Rajdhani Express. Let's see the last box here on the page. When we talk about something for the first time, we use a or an. Okay, when we talk about the same thing again, we use the. अगर आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ए या फिर एन यूज़ करते हैं. जब आप उस चीज़ के बारे में दोबारा बात करते हैं तो आप द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ डॉग द अदर डे. द डॉग वॉज ईटिंग. सो आई सेड, wait, I'll write it for you. Okay, let's take another example. I bought few apples yesterday. The apples were yummy. See, मैंने पहले यूज़ किया I bought apples, or you can maybe say I bought an apple yesterday. The apple was yummy. So when I talked about the apple first time, and the second time I'm talking about it, I'm using the. So that's how you can use the when you're talking about something the next time or the second time. Alright? Okay, so exercises are here. So children, on the basis of the rules that we have studied now, you have to write a or an or the in the given space here. Second one, again the same thing. According to whatever rules we have studied, we have to write a or an or the in the blanks given. Please read this one here. Some words start with a consonant but they have vowel sound. For example, an hour. Children, कुछ word होते हैं जिनमें consonant is the first letter of the word, but the sound is a vowel sound. For example, hour, an hour. We say an hour. The first letter is H, which is a consonant, but the sound of it is a, hour, r. Alright, that's why we will use an hour. Okay, next page. Similarly, you have to do this third and fourth exercise also, children. You have to tick whatever is correct, this or this, this or this, according to the rules that we have studied till now. That's it for children. That's it for today, children. If any questions, you can please ask me. Thank you.